All right, Assalamu alaikum everyone. Yeah, I know I'm late. Let me just get charging sorted and then we'll start. Hello everyone. Okay. All right. So welcome to this session. And in this one, we are basically going to be talking about the different stuff that could be tested tomorrow. And basically, if you think about your syllabus, then it's really all of your syllabus, if you look at it generally. And the only things which are not coming is basically space physics, which you haven't covered yet. And the other thing which is not coming, and it's really just small chunks here and there. So for example, like pressure is not coming, light and lenses is not going to be tested. You know, some stuff here and there, but otherwise all of your syllabus content is going to be tested. So now what I had in mind is basically I tried to come up with questions which are relevant to your test tomorrow. And I thought that we could go through those. And I basically found some MCQs, some paper 4, some structured questions, just so you can do your papers tomorrow more comfortably. So from your syllabus sections, we are going to be looking at more or less in the same order that you have your syllabus. So starting from kinematics and then moving down towards waves and all of that stuff. Then electromagnetism, again, another very important part of the syllabus. And then moving towards, what do you call it? Then moving towards, uh, what do you call it? Nuclear physics, radioactivity, right? So that's what we'll be doing today. So we'll be starting off with a couple of questions. Let's first start with this one. Now this is related to kinematics. This is what we're doing now. Actually, let me shift this down here and write kinematics. Again, also just to sort of give you guys a reality check of what's going to be done in this session. I won't be able to do all the concepts, all the questions you might have. This is strictly a problem solving session. And after this session, you will probably have a good idea of where you stand and what you need to work on. So the night is long, you still have a lot of time, and you can like basically work on whatever you're lacking with. So let's write down the date here. This is our pre-mid revision session. And first we're looking at a few ideas related to kinematics. Now if I just verbally go through what kinematics involves as a chapter, then with kinematics you basically have your basic definitions and all of that stuff. So your so like how you define quantity, speed, displacement, distance, velocity, acceleration, and the real tough questions that you have related to kinematics are to this idea of graphs. Now, a lot of people don't know how the graphs actually work, which is why I basically want to talk more about the graphs. All right. Okay. So with graphs, first of all, this is the, okay, so this is kind of disturbing then. Yeah. So with graphs, you have this question, and let's have a look at this one. So this one says the curved line on the distance time graph shows the motion of a toy car. The straight line is the tangent to the curve at 10 seconds. Uh,
Before going any further, this is how you actually have to tackle questions, which is to say that because this is a distance time graph, that's what you have to first read, and that's how you have to tackle this question. My students know that we have to tackle this question in a total of 3 steps. The first step is to identify what type of graph you're working with here, right? So the first step is just to see what type of graph this is. For example, if we look at this one, this is a distance time graph, right? So this is distance time. Now for a distance time graph, okay, how do I hide this? Because this is really distracting. Yeah. So for a distance time graph, you need to know this, that after you've done the first step, which is identifying the graph that you have, then you need to write down whatever are the features of any graph generally. So I'm not even looking at the question right now. I'm just thinking, what does the gradient, what does the area of this graph give me? So I know that the gradient of a distance time graph is speed, and the area of the distance time graph gives me nothing which is of really any use to me. Now he's given me the tangent to the curve at 10 seconds. Now people that study math, that study AdMath, they already know that whenever we draw a tangent to a curve, the reason of drawing this tangent is to find the gradient at that point, and in this context it would be giving me the speed at that point, right? So for the distance time graph, the tangent that is drawn at 10 seconds is basically going to give me the speed at 10 seconds, which is exactly what the examiner has asked for. So now all I need to do is I need to use the gradient formula, and I just need to locate 2 points. So for example, one is this, another one is this. I can see this is like 0, 3. This one is 10, 6. Then I can just use change in y over change in x. Or if you also want to look at it this way, if you say it's a distance traveled in a particular amount of time, so you'll say that from 3 to 6, it travels 10 meters, right? So you would say, oh, sorry, I'm actually saying it the other way around. From 0 to 10 seconds, it goes from 3 to 6, so it travels 3 meters. Anyway, whatever I do, it's going to lead me to the same answer. So distance traveled in some time, so I cover 6 minus 3, 3 meters additionally in that 10 seconds. So the answer for this would turn out to be A, 3 over 10, which is 0.3 meters per second. All right, let's go on to some more questions, because I know kinematics is really important and also really confusing to a lot of people. That's why I chose to give some extra time to this here. Let's have a look at this question. And again, all of the questions that I'm doing are from my past paper books and from my worksheets. So people who have the books, they already know because they have the answers to these questions as well. Right, let me just, okay. Okay, so let's start sharing again. Now that was a distance time graph. This is a speed time graph. So so the speed time graph for a car's journey is shown. Again, how would I use the same 3 steps again here? First step, what type of a graph is this? This is a speed time graph. Next step, I need to recall what the gradient and the area of this graph represent. Because this is a speed time graph, gradient is acceleration, area is distance. Now it's telling me in which part of the journey is the car moving with non-uniform acceleration. Now what does non-uniform mean? In the context of kinematics, uniform means constant. So non-uniform means not constant. Now the acceleration is the gradient of this graph. So if I'm looking for non-constant acceleration, that means I'm looking for non-constant gradient. We know that lines have constant gradients and curves do not have a constant gradient. So what I'm basically looking for here is just a curve.
and that's only happening with C. So that's why the answer to this one is option C. All right. Again, fair enough. All right. Let's go on to other questions now. Again, now we're looking at questions related to forces and whatnot. Later, we'll also be looking at paper two. Again, it's kind of like a random order, what I thought is the most important with regards to your test. So that's what we're doing. All right, let me just see. Okay. Now, questions related to forces, and forces is obviously like a pretty big chunk of your syllabus because it involves terminal velocity, Newton's laws, falling parachutist, all of that, momentum. A lot of that stuff is also like part of forces. So let's have a look at a few of those questions. Okay. So this question, let me start sharing again. Again, the reference is written here. So again, a very recent question. A small submarine of mass 1000 kg sinks in water with a constant speed of 2 meters per second. What is the resultant force exerted on the submarine as it sinks? That's what this question says. All right. Okay. Now, because this is sinking with a constant speed, what do you think the resultant force would be? All right. What would the resultant force be? Now in this case, and also in questions related to work energy power, this applies equally to O levels as well as to A levels. This piece of advice that basically whenever you are told that something is traveling at constant speed, this means that it's not accelerating. What connotations does it have for acceleration? That is that acceleration equals to zero. And by Newton's second law, this also implies that the resultant force must be zero. So that is why there is no resultant force on this submarine. If the examiner asked you maybe something like this, that let's say he gave you this downward force, maybe he said that maybe this is a value like, I don't know, 20,000 newtons. Then you would say an examiner, maybe if he asked something like this, that what would be the upward force, then it would be the same force 20,000 but upwards, because that's what makes the resultant zero, right? So that's how you would tackle a question like this. Let's go on to another one. Again, so right now we're basically doing grade 9 stuff if you want to look at it that way, but soon we'll be going on to higher level stuff. Okay. Okay, let's have a look at this one now.
So now we are basically doing, and I forgot to add the labels to the previous ones as well. I'm just talking about this verbally. You can keep on writing it down, or whenever you're rewatching this video later. Which is this, that now we are looking at questions related to forces, and this in particular is a question related to the idea of circular motion. So how do objects in circles move? All right. Okay. So the International Space Station orbits the Earth. Which arrow shows the direction of the force on the International Space Station when it is at point X? All right. Let me just. Which arrow shows the direction of the force on the International Space Station when it is at point X? Now this says the direction of the force, right? So for the direction of the force, you need to know that for the force on any object which is moving in a circle, it's going to be towards the center of whatever path it's tracing out. For example, in this case, it's tracing out a path like this. So right at this point, the force would be towards the center. And if the examiner ever asks for something like this, you also know that because of Newton's second law, the acceleration would also be towards the center, right? So force and acceleration are always in the same direction. In this case, they are both towards the center. So in this case, the answer would be A, because this is where the force is directed, this is where the acceleration is directed. Let's say if the examiner asks, instead of the force, he asks you for the direction of velocity. And honestly, this is like the only types of questions that the examiner can ask here. So with that, if you now have to give the direction of the velocity, how would you give that? So if this is the direction of the orbit, you need to know that for an object in circular motion, the velocity of this object is tangential to the path of the circle, right? So for example, right at this point, if gravity ceased to exist, then this space station would just go in the direction it was last moving in. So in that case, it would have been C. But as the question is, it's A. Yeah. All right. Let's look at something else. Let's talk about Newton's third law as well, in idea, which is honestly fair enough, but a lot of people get confused with it. So let's do something for that. Again, this is also an MCQ, and if you remember exactly how to tackle questions like these, it's going to be very easy. There's just like one thing that you need to know regarding how you tackle questions related to Newton's third law. Okay. Also, walaikum assalam to whoever just joined. Okay. So this one says, 4 of the gravitational forces that act between bodies in the solar system are listed below. So there are some forces. So this is force on the moon due to the earth, force on the earth due to the sun, force on the earth due to the moon, force on the moon due to the sun. All right. So these are different forces, and the examiner asks which one is a Newton's third law pair, action and reaction. Now, how you're supposed to talk about Newton's third law is this. This one says that if you have a force A, if you have two objects, let's say A and B, and if A applies a force F, and I'm writing this as a subscript AB, which means this is the force that A applies on B, then B applies an equal and opposite force on A. So keep in mind that in Newton's third law, the forces do not cancel out because they're acting on different objects, right? But they're equal and opposite direction. This is what a lot of people do remember. What they fail to remember is that they are acting on different objects. And you can get this idea really easily. Because what you basically have to do is, if you know the action pair, then for the reaction pair, you just need to reverse the order of the objects.
For example, if here it's A on B, then it's going to be B on A. Now, for example, if I read this first statement, the force on moon due to the earth, so I can call this one force earth on moon. So what would be its Newton's third law pair? That would be force moon on earth, right? Moon on earth, if you see here, it's written here like this. This is earth due to moon, which is the same thing as moon on earth. So P and R are this Newton's third law. All right. So that's what this one is. Okay. Now I want to show you guys a question related to forces and circular motion and kinematics. In my opinion, this is one of the most difficult questions ever. So if you really wrap your heads around this one, then this means that you do know forces. So let's have a look at this. Okay. So this is the reference to this question. Again, so this is forces, kinematics, and also circular motion later will pop up. So this is all of that. A bus leaves a bus stop at time t equals to 0, travels along a horizontal road until it reaches a second bus stop. 7.1 is the distance time graph for the bus between 0 and 860. Now I'm going to stop. Because this is a graph, again, I use my graph steps. What graph is this? Distance time. I'm not even looking at the question right now. What is the gradient of this graph? Its speed, and the area is nothing of use to me, right? So I see that this is a curve here, and then it's a straight line, and then it's a curve here again, but this one was going up, this one is going down, then this distance time graph becomes horizontal. This is what I see at first sight. But when I really think about what the gradients of this graph represent, I see that here, this is the type of graph which is getting steeper. The gradient here is increasing. This means that the speed here is also increasing. Then the gradient becomes constant. So that means the speed is also constant. And here the gradient starts to decrease. So the speed also decreases. At this point, I can see that the gradient becomes 0 because this is the horizontal line. So for the gradient becoming 0, this also means that the speed becomes 0 and the object is at rest. I'm doing all of this while not even reading the question, right? So you are already thinking of what the examiner could possibly ask. Now if I read the rest of the question, it says the road on which the bus is traveling is straight except for a short curved section. The bus travels around the circular curve between 21 and 24. So it says that the road on which it goes is straight except for a short curved section, and it says this is a circular curve between 21 and 24. This circular curve is basically where circular motion comes in. So 21 would be here, 24 would be here. So this is basically where it's traveling on the circular curve. Describe how the motion of the bus between 0 and 10 differs from its motion from 35 to 40. So from 0 to 10, I would just say, and again, I've done all the groundwork previously, so I don't really need to do anything new. I would just say that from 0 to 10, 0 to 10 seconds, the object speeds up. And if I ask you guys, would I be right in saying that this starts from rest, right? Because this is 0, right? Right? Actually, no. Just because this distance is 0 does not mean that it's starting from rest. Because again, if I take you back here, the gradient here is speed. So because if I were to draw a tangent to this initial point, it would be horizontal.
This is why the initial speed is 0. It is 0. But it's not because this graph is starting from 0. It's because if I were to draw a tangent here, this would be horizontal. So I would say the object speeds up from rest. From 35 to 40, I would say the object slows down, or another way to say is the object decelerates. And it also came to 0 speed, so I would say it decelerates to rest. All right, that's how you answer this question. Okay, on to the next part of the same question. So what does this one say? B1, determine the max speed of the bus during these 60 seconds. Now you need to find the max speed. All right. Again, it's asking for the max speed, which very well could be at just an instant. Again, if I know these ideas, then it's going to be very easy for me to think about it. If I've already written this, then I know that whenever I'm talking about the max speed, I'm talking about the max gradient. So now I'm thinking that where is the graph the steepest? Is it the steepest here? Let's test this. So maybe somebody is thinking maybe it's the steepest here. If I draw a tangent anywhere here, it's nowhere as steep as this. Similarly, if I draw a tangent anywhere here, it's nowhere as steep as this. This means that this is the steepest part of the graph. This is what I have to work with to find the speed. All right. Always take pretty nice points which lie exactly on the corners of boxes, because those will be the best coordinates you can get. For example, I see this really pretty point here, which is this one. So x comma y, this is 30 comma 300. Why am I doing this? Because I need to find the gradient. And another point, let's see. Another point could be this. This is also exactly at the corner of a box. So this is 20, and then I need to read the y-axis. So between 100 and 200 would lie 150. So this is 2 boxes less than that. So this would be 20 comma 180. So 20 comma 180. All right. Now since I have these, I can just find the gradient. I would just say that the gradient here is the speed, and that is change in y over change in x. So y2 minus y1, 300 minus 180 over x2 minus x1, 30 minus 20. This would be 120 over 10, which is 12 meters per second. All right. So that's how you would do this first part. Okay, now this is a pain. But anyway. So this is how you would do this part. Yeah. Average speed of the bus between leaving the first bus stop, arriving at the second bus stop. So between this, now I need to see when does it actually arrive at the second bus stop. Because the graph has been given to me all the way till 60 seconds. Is it really traveling all of this time? I know it just came to rest here. And after this, this is always at rest. So this means it reaches the second bus stop at 40 seconds, right? So average speed is total distance over total time. This is 1 less than the 400 box. So this must be 390, and the time would be 40. So this is going to be 390 over 40. Average speed, total distance, total time, 390 over 40, which is 9.75 meters per second. I'm not even going to be bother with C part 1. It's really straightforward, right? Which is basically that
State how velocity differs from speed. So velocity is a vector, speed is a scalar. Very easy. What I want to talk about is this, because this is a really important part related to forces. There are 3 periods during the 60 seconds when there is a non-zero resultant force acting on the bus. Right? Non-zero resultant force means there is acceleration happening, because that's what Newton's law says. So this is some acceleration. Complete the statements to indicate these 3 time periods and state the direction of the resultant force in that period. So if there is acceleration, I saw that in the very first stage, which was from 0 to 10, this object was speeding up. And the only way the object can speed up is if the acceleration and hence the resultant force and the velocity are in the same direction. Right? For example, if you drop an object, or maybe if you throw an object down, then you know it accelerates. Because acceleration due to gravity is downwards, its velocity is also downwards. So I just need to say the direction of the resultant force, I would say, is in the same, or I can say is in the direction of velocity. Right? So however it's moving, the resultant force is also in that same direction. If you're talking about the bus, then this means that the force that the engine produces is in the same direction. All right. Next, I also know that from 35 to 40, this is slowing down. So the direction of the resultant force in this one has to be opposite to the direction of velocity. Now, what would be the last stage? Okay, you cannot see me, right? Okay, so this is lagging a bit then, I think. We start again. All right, so is it, okay, anyway, let's try our best. Okay, and the third period, now how would I get the third period? Because if I see here, all the way on the straight part of the graph, yeah, you're right, Mustafa. Something is definitely up. Okay. Hello. I guess it's fine now. Yeah, this is something that happens when I charge and use the mic at the same time. And I think this is the reason for, yeah, see? Now it's fine. Anyway, so yeah, we were talking about this, that from 0 to 10, we just saw that it's accelerating. So the force must be in the same direction as the velocity. Here it's decelerating, force must be in the opposite direction to the velocity. All the way in the middle, I know that speed is constant, right? Speed is constant, which means that the gradient is constant. So how do I find the third section? It's from this information. Because between 21 and 24, it's traveling on a circular curve, I would again say that in this case, the direction of the resultant force is not in the direction of the velocity. It's not opposite to the direction of velocity. But as we just saw, it's towards the center. I would say it's perpendicular to the direction of the velocity.
So 21 and 24, it's perpendicular to velocity, right? Or you could also say it's towards the center of this circle. During the journey, air resistance acting on the bus varies. For air resistance, you really need to know one thing, which is that it changes with speed. So state why the air resistance changes during the journey. You would just say that the speed also changes. On 7.1, mark and label with an M a time when air resistance is maximum. Based on your part here, for air resistance to be maximum, speed is also maximum. You actually just use that in this part. So the speed is maximum all throughout this straight line part. So you just pick any point and you write M over there. Right? So this is where your air resistance is the maximum. All right. So that's basically something related to forces as well. Let's now try to do. Actually, you know what, let's actually move on to electromagnetism first and kind of work backwards from there. Because I think that is something a lot of people are facing problems with. Let's start actually from the very last. Let's do something related to nuclear physics and then uh, go backwards towards electromagnetism. Okay, so this is a question that I found which deals with a lot of what this unit on radioactivity in your syllabus is all about. Again, obviously, it's not an exclusive sort of a question. It does not cover some ideas like randomness. It doesn't cover half-life questions in a lot of detail. I have a video on that on the channel, by the way, that covers all possible type of half-life questions. So if you struggle with that, make sure to go through that as well. But yeah, still, nonetheless, this is a pretty good question. So this question says, for the first one, it says that winter 18, paper 22, question 6, that's its reference. Detector is switched on and 6 readings of the count rate are recorded. Keep in mind this is without any radioactive source placed. So this is basically giving you the background radiation, right? So it gives you 6 values and you are first supposed to find out an average. This is pretty straightforward, right? You just add them all up, divide by 6, whatever answer you get, that's what you write. 6.1 shows a point P, which is a very short distance from the end of the radiation detector. A sample of the radioactive isotope cobalt-60 is placed at P. Average value of the count rate is now 975 counts per minute. Average count rate is determined with different objects between the radiation detector and the sample. The table in 6.3 shows the results obtained. So with no object placed and just the isotope, you have 975. With 4 sheets of paper placed, you have again just one more, which you can attribute to the randomness of radioactive decay. So it's basically the same reading. Then you have you have 0.5 millimeters thickness sheet of aluminum. You know this gives you the presence of a certain guy called beta, right? Because this fell by so much, this means that all of the beta was blocked. And after that, when you place a 2 centimeter thickness of lead, this basically again drops, showing you the presence of gamma. So there's no alpha here, because if there was alpha, then this reading should have also fallen when we had the sheets of paper here, right? So no alpha, you have beta, you have gamma.
Again, if you think about it, I'm even posing questions before the examiner asks any. You might be thinking that this is because I have looked at the question. I have looked at the question, but that's not why this is happening. All right. Any good candidate would be able to do this. Asking questions based on the information, that only happens when you do enough practice. So by placing ticks in the appropriate boxes, show the radiation emitted, it's beta, it's gamma, no alpha here. The radiation is produced when a nucleus of cobalt-60 decays into a nucleus of this daughter product X. Product X is not radioactive. So number of protons in a nucleus of X, all right? So it decays by beta decay and gamma decay. We know that the gamma decay has no impact on the chemical composition of the nucleus, right? It doesn't have any impact. But for beta particles, I know that if I were to also write out this equation, this is CO60, 27. This is going to decay by beta decay. So it's going to emit a beta particle, which we know is 0, -1. So this X is going to have the same nucleon number, but by virtue of the conservation of proton numbers, the proton number here is going to go up by 1. So from 27, it increased to 28. So number of protons in the nucleus of X, it's 28. Number of neutrons would be nucleon number minus proton number, 60 minus 28. So that would be 32. The half-life of cobalt is 5.3 years. State what is meant by half-life. Again, an idea that confuses a lot of people. Half-life is the time taken for the number of molecules or the number of particles in your atom, or you can also say the count rate of your isotope to half. So I'm just going to say this is the time taken for the count rate, or you can also say instead of this, the number of particles or the number of nuclei maybe to half. Part 2. When there is a lead sheet between the detector and the sample, the average count rate is obtained from 6 readings taken at 1 minute intervals. The 6 readings are given in the table in 6.4. There are reasons for suggesting that the variation in these readings is random and not because the number of cobalt-60 atoms is decreasing. So they're saying that the variation, so first it goes down, then it goes down, then it goes up, then it goes down, then it goes up. So it says it's because of the randomness and not because the number of cobalt-60 atoms is decreasing, right? So how do you see from here that it's these reasons actually, all right? So how would you see that the variation here, the count rate sometimes going down, other times going up, is because of randomness? All right. Now this is what I would say. First of all, I know that if, and by the way, this is true, the number of cobalt-60 is decreasing, but it's not really impacting this. Because if it was, then I would just expect my count rate to go down, 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 down consistently. But sometimes it's going down, other times it's going up. So the first reason is to say that the count rate goes down and also up. All right. Okay, just a second.
Nuclear physics is very much coming in the middle. All right, and apart from this, if you look at this is 5.3 years, right? So this is the time it takes for the activity, basically the count rate of the cobalt to halve. So you know that this half-life is way too big for this to be happening in 1 minute intervals, right? So the half-life is very long compared to the time intervals. Nuclear physics and radioactivity is very much coming. All right, so this is like a pretty good question on nuclear physics. Okay, next. Now let's go on to electromagnetism and some parts related to that. So let's see. So I've kind of picked up a few questions here and there from oscilloscopes, transformers, and whatnot, just to give you an overall feel of this. Again, this is the reference to this question. So on transformers, I guess a lot of you might already be focusing on transformers. For example, those word problems that you have, right? So how to use the turns ratio, VP over VS equals NP over NS. All of you know that, but I feel that in doing a lot of that, you actually kind of lose sight of the more theoretical questions the examiner asks, which is basically related to how a transformer works. So a question that could also be asked here and is asked for transformers, it's not part of this question though. But another thing which is often asked is to explain why there is a voltage across this end, right? So if your primary coil is connected to AC, why is there a voltage at this end? So in that you say that there is an alternating, and by the way, this is for 3 marks. So let me just go through what each of these points is for. You say that there's an alternating current here, which also gives rise to an alternating field here. Those field lines, after passing through this core, they are cut by this coil. This leads to an EMF being generated. And if, for example, the examiner asks you why is there an alternating current here, so you would also say that because the field is alternating, the voltage is also alternating. And if the examiner asks you for current, you would say that because this voltage is across a closed loop, this is why there would also be a current flowing. All right. Here it asks, explain why the core of the transformer is made of iron. So you would say that that's because this is a temporary magnetic material, right? So it's a temporary magnetic material. So it passes on the field produced by the current in this onto this coil, which allows the production of EMF on the secondary side. When there is an alternating current in the primary coil, the lamp is lit.
When there is a direct current in the primary coil, the lamp is not lit. State two ways in which AC differs from DC. So one of the reasons is, okay Mustafa, कौन सा वाला जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था जो पूछा जा सकता है, और दिस वन? ओके, आई सेड दिस कि देखें, अगर उसने आपसे ये सवाल पूछा ना, सवाल ये पूछेगा, एक्सप्लेन वाई एन AC इज प्रोड्यूस्ड ऑन सेकेंडरी। सही, तो दूसरी साइड पे क्यों आपके पास करंट प्रोड्यूस्ड होगा? इसका जवाब ये है, सबसे पहले तो आपने कहा कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके पास AC होगा, सो एन ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग फील्ड। ठीक है, फिर आपने ये कहना है कि क्योंकि ऑल्टरनेटिंग फील्ड है, द फील्ड लाइंस वुड बी कट बाय द कॉइल, और ये मैं सेकेंडरी साइड की कॉइल की बात कर रहा हूं, कट बाय सेकेंडरी कॉइल गिविंग राइज टू एन ऑल्टरनेटिंग EMF। सही, क्योंकि इसका जो फील्ड था ये भी ऑल्टरनेटिंग था, तो EMF भी ऑल्टरनेटिंग है। सही, दिस इज बेसिकली फैराडेज लॉ। मैं ये कह रहा था कि अगर एग्जामिनर ने कभी उसने आपसे EMF की जगह कह दिया कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, देन यू वुड ऑल्सो से दिस दैट अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप, क्योंकि आपने इसको एक क्लोज सर्किट दे दिया ना, दिस प्रोड्यूसेस करंट। सही, और अगेन क्योंकि आपका EMF भी ऑल्टरनेटिंग था, सो दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां आ जाते हैं। स्टेट टू वेज इन विच AC डिफर्स फ्रॉम DC। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये इसका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, AC हैज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता है, नो प्रॉब्लम मुस्तफ़ा, हैज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। DC इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसूलन अगर मैं इसकी बात करूं, इफ आई हैव करंट टाइम, ये हो गया करंट, ये हो गया टाइम, उसूलन अगर मेरे पास करंट यूं भी फ्लो कर रहा है, दिस इज DC, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है। जब इसका डायरेक्शन चेंज होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, दैट्स एक्चुअली व्हाट AC इज, राइट? And the other one you would say is that AC has varying magnitude. Again, that's just more commonly seen. लेकिन distinguishing number one है, DC is fixed magnitude। सही, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है DC का, AC का वैल्यू वैसे चेंज होता है ज़्यादातर, the more common ones। The one I just drew, this is like an extreme case। Explain why the lamp is not lit when there is a direct current in the primary coil। तो अब जिन्होंने ये मुस्तफ़ा के जो सवाल का जवाब था अगर ये सुना था, इसमें ये कह रहा है why the lamp is not lit when there is a direct current। ठीक है, तो अभी तो आपने ये सारा बताया ना कि भाई अगर AC होगा तो किस तरीके से आपके पास ऑल्टरनेटिंग फील्ड होगा, एंड किस तरीके से आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी। तो आपने ये बताना है कि यहाँ पे क्यों जो है, अगर DC होगा तो क्यों आपके पास करंट नहीं होगा। सही है, सो अगर यहाँ पे DC है, सो व्हाई इज दिस लैम्प नॉट गोइंग टू लाइट अप? सो यू वुड सिंपली से दिस दैट द फील्ड अक्रॉस द सेकेंडरी, सही, सेकेंडरी की बात करें क्योंकि वहां पे आपका लैम्प कनेक्ट है, अक्रॉस सेकेंडरी इज नॉट चेंजिंग, सो नो EMF इज इंड्यूस्ड। सही है मुस्तफ़ा, तो ये जो आपने सवाल पूछा था ये उसी का आप समझ लें कि एक डायरेक्ट एक्सटेंशन है।
से फील्ड चेंज नहीं हो रही, फील्ड लाइंस कट नहीं हो रही, तो यहाँ पे और ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। कैन आई शो द ग्राफ फॉर एसी रामीन? या श्योर। अगर एसी होता तो देखें, अगर ये यूं हो गया, एज लॉन्ग एज इट हैज सम रीजन ऊपर सम रीजन नीचे, जो सबसे कॉमन आपको एसी जनरेटर में नजर आता है, दिस इज एसी। ऑलराइट, दिस इज एसी। मैं ये कह रहा था कि उसूलन अगर ये ग्राफ ऐसा बनता ना, ऑल द वे अप, ये उसूलन डीसी होता, दिस वुड बी डीसी, बिकॉज इट्स नॉट चेंजिंग इन डायरेक्शन, पॉजिटिव ही है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Distinguishing characteristic is the direction of flow of current. ठीक है, ओके, अच्छा जी। इलेक्ट्रिक मोटर, अब let me connect the webcam for this. That is called a sine graph. Yeah. और उसूलन तो अगर आपको ये अच्छे से आता है मुस्तफ़ा, देन इट शुड ऑल्सो बी लाइक दिस, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन ग्राफ कब बनता है, कोसाइन ग्राफ कब बनता है, यानी उसकी कौन सी स्टार्टिंग पोजीशन होती है जिसकी वजह से साइन ग्राफ बनता है, और दूसरी कौन सी पोजीशन पे कोसाइन ग्राफ बनता है। फॉर दिस चैप्टर आई नीड, फॉर दिस क्वेश्चन आई नीड द वेब कैम। ओके, आई एम विजिबल, ठीक है। कैन आई, ओके, दिस इज फाइन। दिस इज डीसी मोटर्स। एसी जनरेटर के मैंने कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज निकाले हैं, ट्रांसफॉर्मर का मैंने जो है एक सवाल निकाल दिया था। ये कह रहा है दैट दिस इज ए पार्ट ऑफ ए डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, बाय द वे आपको ये फ़र्क भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास डीसी मोटर होता है उसमें स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है, राइट? उसको स्प्लिट रिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज यू हैव वन रिंग विच इज लाइक कट इनटू टू, राइट? दैट स्प्लिट रिंग। एसी मोटर में आपके पास स्लिप रिंग्स होती हैं, राइट? सो स्प्लिट आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वो दो टुकड़ों में। ठीक है, एनीवे दैट्स नॉट रियली पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट जस्ट समथिंग जनरल. So motor is connected to a battery with its positive terminal of the battery connected to end A. जाहिर सी बात, इसका मतलब दूसरा एंड नेगेटिव है. Explain why the coil turns in the direction shown. ठीक है, कैसे पहचानना है कब लेफ्ट हैंड यूज करना है, कब राइट हैंड यूज करना है? यू यूज योर लेफ्ट हैंड फॉर व्हाट इज कॉल्ड द मोटर इफेक्ट. जब उसने आपको करंट दिया हुआ हो, फील्ड दिया हुआ हो, और आपने फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ द थंब विच इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. दिस इज व्हेन यू यूज योर लेफ्ट हैंड. व्हेन डू यू यूज योर राइट हैंड? जब उसने आपको फील्ड दिया हुआ हो, उसने आपको बताया हुआ हो कि भाई थंब का डायरेक्शन क्या है, सो कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड फिंगर टेल्स यू हाउ द इंड्यूस्ड करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, तो ये भी अपने जहन में क्लियर रखें. फोर्स ढूंढना है, यू यूज लेफ्ट हैंड. ठीक है, जब आपने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ढूंढना है विच इज कॉल्ड द जनरेटर इफेक्ट, दैट्स व्हेन यू यूज योर राइट हैंड. अच्छा जी, अब यहां पे कह रहा है व्हाई द कॉइल टर्न्स इन द डायरेक्शन शोन. तो ये कॉइल जो है ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. अच्छा, अब ये मैं कैसे फिगर आउट करूं? मुझे पता है कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहां यूं, देन लाइक दिस, देन हियर, देन डाउन हियर, एंड देन लाइक दिस. दिस इज हाउ इट वुड बी फ्लोइंग. अगर मैं लेफ्ट हैंड यूज करूं, एंड लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइड, सही है, मैं इसकी बात कर रहा हूं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस. लेफ्ट हैंड कैसे यूज करूंगा? सबसे पहले तो, एंड दिस इज हाउ आई वर्क विद इट, सबसे पहले फील्ड इज द इजीएस्ट थिंग टू सी. तो पहले आप अपने हाथ को उस हिसाब से अलाइन कर लें. फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट फील्ड लाइन्स आर गोइंग टू बी नॉर्थ टू साउथ, तो मैंने इस हिसाब से अपनी उंगली को, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से अलाइन कर दिया. नाउ इफ दिस इज लाइक दिस, आई नो कि अब आगे मैं जो भी करूंगा मैं इसको यूं यूं नहीं कर सकता. दिस हैज टू बी लाइक दिस. ऑलराइट, it could possibly move like this, like my wrist could move, but my finger is going to be pointing like this. अब मुझे देखना है करंट कैसे फ्लो कर रहा है, राइट? सो करंट इज माय सेकंड फिंगर. अगर मैं इसको यूं रखूंगा, आई सी दैट माय फिंगर इज कमिंग आउट टुवर्ड्स मी. दिस इज नॉट हाउ इट इज. अगर मैं इस एंड के हिसाब से देख रहा हूं, आई सी दैट करंट इज इनवर्ड्स, सो आई ट्विस्ट माय हैंड कीपिंग माय
first finger pointing in that same direction, तो मैंने इसको यूं घुमाया, and now the current is going in. This means that the force on it is downwards. ठीक है, इस वजह से इस पे एक डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है, जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि दूसरे एंड पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा. दिस प्रोड्यूसेस एन ओवरऑल मोमेंट विच कॉजेज द कॉइल टू टर्न इन दिस डायरेक्शन शोन. ठीक है, इस हिसाब से आपने इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से ही समझाना है. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से दिस कि भाई पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक फील्ड में, इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड देन आई वुड मेंशन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि भाई उसकी मदद से मैं फोर्स निकालता हूँ, और क्योंकि ये फोर्स जो है दिस इज प्रोड्यूसिंग अ मोमेंट, दैट्स व्हाई इट रोटेट्स. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से. So I say this, that force is experienced by a current carrying conductor in a field by Fleming's left hand rule. अब यहाँ पे इसने मुझे कोई साइड्स लेबल करके नहीं बताई है, तो मैं खुद से ही कुछ कह देता हूँ. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉइल, force is downwards, और इसी तरीके से मैंने दूसरे के लिए किया नहीं, बट आई एम स्मार्ट इनफ टू सी दिस, एंड अपवर्ड्स ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या चेंज होगा कि उसमें माई सेकेंड फिंगर वुड बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी, राइट. फिर जस्ट ओपन अप दिस अगेन, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इट वाज लाइक दिस, राइट. सो द फोर्स वाज डाउनवर्ड्स. ये जो राइट हैंड साइड है उसमें ये फील्ड ऐसे ही रहेगी, बट नाउ माई करंट इज टूवर्ड्स मी, सो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है. एंड अपवर्ड्स ऑन राइट एंड, this produces a moment causing the coil to turn. ठीक है, तो ये भी इसका एक तसल्ली बख्श मैंने सवाल करा दिया. टर्निंग इफेक्ट इज इंक्रीज व्हेन द कॉइल इज वूंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर. एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस. तो ये कह रहा है कि भाई अगर यहाँ पे ये जो है एक सॉफ्ट आयरन को रख देगा, तो अब फोर्स ज़्यादा क्यों होगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन. ठीक है, सो फोर्स ज़्यादा क्यों होगा. तो आपको पता है कि भाई अगर आपने सॉफ्ट आयरन को रख दिया, तो इससे जो है क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वुड गो अप. सो यू वुड से दिस, that a stronger magnetic field exists, leading to a larger force. Okay, how about the last part? Suggest one other way. आपको तरीके पता हैं, या तो आप करंट बढ़ा सकते हैं या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, राइट. आप कॉइल की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं. दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो, लेकिन वही आइडिया है जो आप टर्निंग इफेक्ट्स में पढ़ते हैं, कि अगर ये आपने कॉइल का विड्थ बढ़ा दिया तो फोर्स तो उतना ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि आप डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सल, एक्सिस या एक्सल, इससे आपने बढ़ा दिया, so this would now lead to a greater moment, right. So all of these would be correct. The most straightforward one in my opinion is more turns. ठीक है, अच्छा जी, तो इसके भी कुछ सवाल देख लिए. लेट्स लुक एट अ फ्यू एमसीक्यूज स्पेशली रिलेटेड टू द ऑसिलोस्कोप, क्योंकि मुझे पता है लोगों को उसमें मसला होता है. सो लेट्स फाइंड समथिंग इन दैट डिपार्टमेंट. ओके, सो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस. ये ऑसिलोस्कोप के भी हैं इसमें. Also, by the way, I don't think we are going to be able to do P force, right.
इसका ये आइडिया है कि भाई आप लोग जो है, देर आर अदर वीडियोज़ ऑन माई चैनल, उसमें P4 सॉल्व हुए हुए हैं, प्लीज़ वो थोड़े से देख लीजिएगा। क्योंकि उसमें जो प्लानिंग क्वेश्चन है वो कैसे टैकल होता है वो देख लें, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनती है, इम्प्रूवमेंट्स कैसे सजेस्ट होती हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट एज वेल। ऑलराइट, अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा जी, सो लेट्स फर्स्ट लुक एट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप के लिए भाई मैं आपको जनरली बताऊं, देयर इज नथिंग टू फैंसी विद दिस। द ऑसिलोस्कोप जस्ट शोज यू अ ग्राफ, जिस ग्राफ पे आपके पास वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम होता है। सही, ये इस ग्राफ की आपको शक्ल बता रहा है। और इसके बारे में आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसका भी रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है। यू शुड जस्ट नो दिस कि भाई अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो, तो टाइम पीरियड इज टाइम बेस मल्टीप्लाइड बाई हॉरिजॉन्टल डिविजन्स। ये आप कैसे याद रखेंगे कि भाई टाइम जिससे निकालना है उसके नाम में टाइम आ रहा है, बहुत ही आसान। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन शुड कॉरिस्पॉन्ड टू वन वेव, राइट। अच्छा, ये कुछ वेव्स की बात है कि आपको जो हॉरिजॉन्टल डिविजन्स है दैट मस्ट कॉरिस्पॉन्ड टू वन वेव। सो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे टाइम मुझे निकालना होता, टाइम बेस दिया होता, दिस वुड बी 1 2 3 4, आई मल्टीप्लाई इट विद दिस एंड आई गेट द टाइम पीरियड। इसी तरीके से अगर वो मुझसे कहेगा कि एम्पलीट्यूड निकालो, तो जिस तरीके से आपका टाइम पीरियड होता है एम्पलीट्यूड के लिए, देयर इज अनदर सेटिंग कॉल्ड द वाई गेन। और जिस तरीके से आपके पास वेव्स में एम्पलीट्यूड लेबल होता था, वो इस तरीके से वर्टिकली लेबल होगा। सो वाई गेन मल्टीप्लाइड बाई, आई कॉल इट द वर्टिकल डिविजन्स। ठीक है। अच्छा, इस सवाल के लिए वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जनरली थोड़ी सी कोशिश की कि इसका भी रिकैप करा दें। ऑल्सो अगेन इट्स बिट ऑफ एन ओवरलोड, बट एग्जामिनर ये वाले सवाल ऑफन पूछता है, विच इज़ कि अगर आपके पास या तो टाइम बेस ऑफ हो या ऑन हो, तो उस हिसाब से आपके पास एसी या डीसी के शक्लें कैसी बनती हैं। द टाइम बेस इज बेसिकली व्हाट मेक्स द ट्रेस मूव अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है। सो ये ऐसी एक्सेस होती है, इट्स लाइक दिस। अगर डीसी होता है, इसका मतलब लेट से वो 5 वोल्ट है, तो भाई वो 5 वोल्ट का आपको एक डॉट बना आ रहा होगा इफ द टाइम बेस इज ऑफ। जब आप टाइम बेस को ऑन करेंगे, सो दिस बीम दिस स्टार्ट्स टू रन अक्रॉस द स्क्रीन एंड दिस बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये डीसी के लिए था। एसी के लिए क्या होता है कि क्योंकि अगर हम एसी की बात करें तो वो 5 पे खड़ा नहीं रहेगा, वो 5 - 5, तो इस तरीके से ये एक वर्टिकल लाइन बन जाती है। एंड व्हेन यू अलाउ इट टू मूव अक्रॉस द स्क्रीन, तो ये आपको ये वाली साइन वेव वाली शक्ल देता है। ठीक है। एनीवे, बैक हियर, ये कह रहा है टाइम बेस जो है वो 4 ms/cm है इस ग्राफ के लिए। ये कह रहा है अगर मैं इसको 2 ms/cm कर दूं, अब क्या होगा। अगर मैंने टाइम बेस को कम कर दिया, तो मैं टाइम पीरियड को तो नहीं छेड़ रहा ना, वो तो मेरे ट्रेस से आ रहा है, मैंने इसको जिससे भी कनेक्ट किया है, जो मेरा इनपुट है। So if my time base is going down, this means my number of horizontal divisions for one wave are going to go up. पहले अगर मेरा 4 में एक वेव की शक्ल बन रही थी, तो अब 8 में बनेगी। तो ये किस में हो रहा है? That's happening with C. ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है रे या बेटे, हर साल आप आगे एक ही सवाल पूछते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, सब बता रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है। बट लाइक काइनेमैटिक्स, फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रेडियो एक्टिविटी, जनरल वेव्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर मैं यूनिट की बात करूं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ओके, अच्छा जी, सो दिस इज वन क्वेश्चन, द लास्ट वन दैट आई वांट टू डू फॉर टुडे। अगेन, जिन्होंने भी सेशन मिस किया है, इफ इट्स योर फ्रेंड्स, एनीबडी, प्लीज़ आस्क देम टू वॉच इट, इससे फ़ायदा होगा। ऑल राइट, ओके, सो दिस इज दैट क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसमें वोल्टेज डिवाइडर, ये सारी चीज़ें, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हैं ये यूज़ हो रहे हैं।
So this says the circuit contains two identical cells, each of EMF 1.5 volt that are connected in parallel. Again, a very recent question. Circuit also contains two ammeters, a thermistor, two resistors R and S. Again, my students know कि मैंने उनको ये सवाल एक बार क्विज में दिया था. Reading on ammeter 1 is 0.2 ammeters. State why the reading on ammeter 2 is also 0.2 amperes. बहुत ही आसान है because this is a series circuit. तो दोनों के थ्रू एक ही करंट जा रहा है. So series circuit, so same current. Resistance of R is 1.5 ohms. ठीक है, इसका रेजिस्टेंस पता है, आपको करंट पता है, तो इसका मतलब आप इसके अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ S is 3.5 ohms. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ T. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे क्या करने का तरीका है, पहले तो आप ये देखें कि ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में, राइट. बोथ ऑफ दीज आर इन पैरेलल. इसका मतलब है इनका ईएमएफ एड अप नहीं होगा. पैरेलल का एडवांटेज होता है दैट सेल्स लास्ट लॉन्गर. सीरीज में लगाने का एडवांटेज होता है दैट द ईएमएफ एड्स अप. पैरेलल में लगाने के और एडवांटेजेस भी होते हैं दैट दी सेल्स अगर एक चला जाता है द अदर वंस कैन स्टिल फंक्शन एंड दैट यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ ईच ऑफ द सेल्स इंडिपेंडेंटली. लेकिन यहाँ पे ईएमएफ 1.5 ही होगा. ठीक है. मुझे अगर ईएमएफ पता है, मुझे अगर करंट पता है, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं सिंपली यूजिंग R इक्वल्स टू V ओवर I. ये टोटल क्यों है? क्योंकि भाई ये जो 1.5 है ये तो इन तीनों पे आ रहा है ना, राइट. इट्स नॉट अक्रॉस वन, इट्स अक्रॉस ऑल ऑफ दीज. सो ये जो आएगा 1.5 ओवर 0.2 विच इज 7.5, ये इन तीनों का रेजिस्टेंस है, ये RT है, टोटल रेजिस्टेंस. Now because all of these are in series, you can also say this is R plus S plus T. ठीक है. तो R और S दिया हुआ है. R कितना है? 1.5, S है 3.5. तो आप करेंगे T इक्वल 7.5 माइनस 3.5 माइनस 1.5 विच इज 2.5 ohms. ये इस थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है. ऑलराइट. So this is one way to do this question. अच्छा, अब ये वाला जो है ये मैं ज़रा समझाना चाहता हूँ. पोटेंशियल डिवाइडर का सवाल जब आएगा, इट कुड बी फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टर, इट कुड बी फॉर अ वेरिएबल रेजिस्टर लाइक अ थर्मिस्टर, लाइक द वन दैट वी हैव इन दिस क्वेश्चन. और इसको टैकल करने का तरीका आपको आना चाहिए. ठीक है. मैं आपको ज़रा इसमें समझा दूँ बिकॉज व्हेन आई टुक दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ students wrote an explanation which would be correct if this was a fixed resistor, but this is a thermistor. चाहिए. T जो है ये एक थर्मिस्टर है, तो इसमें आप कैसे समझाएंगे ये? तो ये कह रहा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम होगा? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई इफ टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर गोज अप देन रेजिस्टेंस गोज डाउन. अगर ये LDR का सवाल होता तो मैं कहता, ये सवाल ये कहता कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस सेम ही होता कि उसका रेजिस्टेंस LDR का उस केस में कम होता. ठीक है. अच्छा, अब अगर T का रेजिस्टेंस कम हुआ है, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सही है ना. देयर आर टू वेज टू एक्सप्लेन दिस. आपने बताना है, नो एक्चुअली इन दिस केस, ऑलराइट, सो देयर इज ओनली वन वे टू एक्सप्लेन दिस. आपने बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस T क्यों कम हो रहा है. ठीक है. अब क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ T कम हुआ है, यू वुड से दिस इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था कि मैंने अपना T ढूंढा एज 2.5. सो इफ आई थिंक अबाउट 2.5 एज 7.5, देन दिस इज अ लार्ज पोर्शन, इट्स 1/3 ऑफ द रेजिस्टेंस. अब अगर मैं सोचूं ये 2.5 की जगह 1 हो जाता है, राइट. सो 2.5 ओवर 7.5, लेट मी ऑल्सो राइट दीज नंबर्स. 2.5 ओवर 7.5, पहले दिस वॉज 1/3, दिस इज 1/3, 0.33 ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस. अगर मैं कह देता हूं ये दोनों जो है क्या कहते हैं, लेट्स से ये 2 से कम हो जाता है, तो हमें पता है सीरीज है, अगर ये
2 से कम हो गया तो ये 2.5 से 0.5 हो गया, ये वाला 7.5 से 5.5 हो जाएगा. दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी वे लेस देन दिस थिंग. तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये कैसे वैल्यू कम हो गई. So now the thermistor is a smaller fraction of the total resistance, and that is why you would say by voltage division it takes up a smaller share of the voltage. Why did I say that there is only one way to explain this? क्योंकि यहाँ पे आप ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते जो मैं अब बताने वाला हूँ, जो फिक्स रेजिस्टर के लिए ठीक होता. अगर आप यहां ये कहते कि भाई रेजिस्टेंस इसका कम हुआ, और अगर आप ये कहते कि रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट बढ़ेगा, एन बाई वी इक्वल्स टू आई आर, क्या होगा आगे? हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस गोज डाउन? बिकॉज देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग हियर. करंट तो बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस तो कम हो रहा है. दैट्स वाई दिस एक्सप्लेनेशन फेल्स हियर. अगर फिक्स्ड होता ये ठीक होता, क्योंकि फिक्स्ड में ये वाली चीज चेंज थोड़ी होती है. But with a thermistor, this thing is changing. You cannot use this reasoning here. ठीक है, इस वजह से आपको ये चीज कहना ये बहुत जरूरी है. The second point. Each of these points correspond to a mark. Okay. ओके जी मिस्टर याया, इस सवाल में ये कह रहा है कि भाई अगर T जो थर्मिस्टर है इसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम होगा. आपने इस चीज से स्टार्ट किया कि भाई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो यू नो LDRs एंड थर्मिस्टर्स हैव इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि जिस भी चीज पे वो डिपेंड करता है, अगर वो बढ़ती है रेजिस्टेंस कम होता है एंड वाइस वर्सा. दूसरा आपने ये कहा कि भाई क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होगा, दिस इज नाउ अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस. जो मैंने यहां करके बताया आया, पहले 2.5 था एज अ फ्रैक्शन ऑफ 7.5. अगर वो 2.5 कम हो गया 2 से, तो इसका मतलब टोटल भी तो 2 से कम हो गया ना. बट नाउ इफ आई फाइंड दिस फ्रैक्शन 0.5 ओवर 5.5, आप कैलकुलेटर में भी करके देखें, ये इस वैल्यू से छोटा आएगा. इसका मतलब है कि नाउ दिस इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस. तो क्योंकि दिस इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द टोटल, उस हिसाब से बाय वोल्टेज डिवीजन इट वुड आल्सो टेक अप अ स्मॉलर शेयर ऑफ द वोल्टेज. ये आइडिया आया. ठीक है, सो दैट्स द आइडिया हियर. ऑलराइट, वैसे तो मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म हो गई है, बट देर इज़ दिस क्वेश्चन दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू. आई विल डू इट विथ यू, विच इज़ दिस. इसका ताल्लुक एनर्जी और मोमेंटम से है, दोनों से. दैट्स व्हाई आई वांट टू डू दिस वन. अगेन पार्ट ऑफ माय पास पेपर बुक्स, उसमें ये जो है ये IGCSE का सवाल है, बट इट इज़ वेरी मच पर्टिनेंट टू योर एग्जाम्स. इस वजह से मैं ये एक सिर्फ सवाल करा रहा हूँ. एंड देन आई एम स्लीपिंग. आप लोग भी सो जाइएगा, बहुत ज़्यादा देर तक ना जागिएगा. ट्रस्ट मी, यू विल नीड शार्प माइंड फॉर द पेपर टुमारो. ओके. ओके, सो दैट्स दिस क्वेश्चन. मोमेंटम के भी आइडियाज़ है इसमें, जो है क्या कहते हैं, एनर्जी के भी आइडियाज़ है. A footballer kicks a ball vertically upwards. Initially, the ball is stationary. His boot is in contact with the ball for 0.05 seconds. Average resultant force दिया हुआ है. Ball leaves his foot at 20 meters per second. Calculate in A1 the impulse of the force. Impulse किस चीज़ का नाम है? Impulse is change in momentum. वैसे हम इसको ये भी कहते हैं, अलग अलग सवालों में आपको ये भी शायद यूज़ करना पड़े. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मास वेलोसिटी नहीं दिया है, तो मेरे पास फाइनल इनिशियल मोमेंटम नहीं आ सकता. सो आई यूज द अदर फॉर्मूला देन, विच इज दिस.
एंड दिस आई कैन यूज वेरी इजीली. मुझे फोर्स दिया है, टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ये दिया हुआ है, इससे मेरे पास इम्पल्स आ जाएगा. सो लेट्स डू दिस हियर. सो 180 टाइम्स 0.05, ये आता है 9.0. इम्पल्स का यूनिट ये भी लिख सकते हैं या केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं. पार्ट 2, द मास ऑफ द बॉल. अच्छा, ये जो है दिस बॉल वॉज इनिशियली स्टेशनरी, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इज देन जस्ट द फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है. सही है. सो मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है. सो 9 इक्वल्स टू मास टाइम्स 20. इन्हें डिवाइड करूंगा, ये मास आता है 0.45 kg. नेक्स्ट, द हाइट टू विच द बॉल राइजेस. दिस इज द एनर्जी पार्ट. ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो ये सवाल देकर समझ ही नहीं आता करना क्या है. बट हियर यू हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे इस्तेमाल करना है? ऐसे इस्तेमाल करना है कि शुरू में इसके पास था किनेटिक एनर्जी. अगर हम उस मैक्स हाइट की बात कर रहे हैं जहां तक ये जाता है, तो इसके पास क्या होगा उस वक्त? सिर्फ जीपी. सो यू वुड से दैट द इनिशियल किनेटिक एनर्जी, this becomes सारा का सारा finally potential energy, which is half mv square, and this is equal to mgh. If you are smart and alert, which is why the emphasis on good sleep, you see कि मास की तो जरूरत भी नहीं है, h आपका ऐसे ही निकल आएगा. So I like to do things with algebra first. It's totally based on your personal preference. So h is v square over 2g. Initial velocity था 20 का square over 2 times 9.8. So this is what you get, right? So this is what 200 divided by 9.8, which is 20.4 meters. 20.4 meters की height तक ये जा रहा है. Again, this is ignoring air resistance. What if there was air resistance? What if air resistance? हमें पता है मैक्स हाइट कम हो जाएगा. या इसी तरीके से अगर वो रिवर्स सिनेरियो की बात करता, वो कहता कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट से छोड़ रहा हूं, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है मैंने कैलकुलेशन से निकाला, लेकिन वो उससे कम आ रहा है. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एयर रेजिस्टेंस है. लेकिन अगर आपने ये पेपर में लिख दिया, एग्जामिनर आपको देगा ठेंगा. यू नीड टू गिव अ वेल थॉट आउट प्रॉपरली वर्डेड रिस्पॉन्स. सही है. अगेन, ये भी मेरे बच्चों ने वर्क एनर्जी में पढ़ा हुआ है. इसका मतलब है कि वैसे तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता है दैट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. तो यहां पे जो एनर्जी कम हो रहा है, व्हाई इज दिस? यू वुड से दैट द एनर्जी is, you would say some energy is used to do work against air resistance. या हो सकता है कि आपका जो इसमें सिनेरियो हो सकता है उसमें वो ज़मीन के साथ किसी डब्बे को घसीट रहा हो, यू वुड से फ्रिक्शन. या मे बी वो अगर पानी में जा रहा हो, यू वुड से विस्कस ड्रैग. दिस इज एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड व्हाट यू नीड टू से, कि कुछ एनर्जी इस्तेमाल हो रही है इन डूइंग वर्क अगेंस्ट दीस रेजिस्टिव फोर्सेस. ठीक है. while the boot is in contact with the ball is no longer spherical. State the word used to describe the energy stored in the ball. So changes in shape की वजह से जो आपके पास एनर्जी स्टोर होता है, इसको स्ट्रेन भी कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं. इसी तरह आपको मोमेंटम के बारे में एक और चीज़ जो कि पता होनी चाहिए, एंड अगेन मोमेंटम के पास पेपर्स आर आल्सो देयर ऑन द चैनल, गो थ्रू इट. उसमें बहुत बहुत प्रैक्टिस मटेरियल है. वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, देन सी इफ यू डन इट करेक्टली और नॉट. एनीवे, इसमें ये जो आइडिया होता है दैट फॉर एग्जांपल व्हाई डू कार्स हैव क्रम्पल जोन्स और सीट बेल्ट्स और एयर बैग्स, इसका आइडिया भी आपको आना चाहिए. मैं इसको ज़रा यहाँ पे इस पेज पे बता दूँ कि आपका जो इक्वेशन होता है, एंड दिस इज हाउ यू डिफाइन फोर्स, दैट्स दिस. फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट पे फोर्स कम से कम लगे फॉर सेफ्टी रीजंस और फॉर एग्जांपल फॉर एनी अदर रीजन, देन यू वुड इंक्रीज द टाइम इन कांटेक्ट. अगर वही चीज आप ज्यादा सुकून से
आके रुक रही है। फॉर एग्जाम्पल जब एक फील्डर कैच पकड़ता है वो क्यों अपने हाथों को थोड़ी देर बॉल की डायरेक्शन में जाने देता है नीचे की तरफ, क्योंकि उससे टाइम इन कांटेक्ट बढ़ता है, जिससे उसके हाथ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है वो कम होती है। दिस इज ऑल्सो अ सुपर इंपॉर्टेंट आइडिया टू नो फॉर टुमारो। ऑल राइट, एंड दैट्स व्हाट आई हैड फॉर यू टुडे। सही है ना मुस्तफ़ा, चलें पेपर से पहले पढ़ लिया तो अच्छी बात है। ऑल राइट, ओके ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरी अब कमर जवाब दे गई है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, प्लीज़ डोंट स्टे अप टू लेट। सुकून से जितना हो चुका है उस पर फोकस करें, प्रैक्टिस अच्छे से करें, नोट्स एक बार देखें। ऑल राइट, बट डोंट स्टे अप टू लेट, ऑनेस्ट एडवाइस। ओके गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।